अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम गैसेस वाले चैप्टर के जो है MdCat प्रोविंशियल MCQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। ये जो MCQs हैं तकरीबन 25 to 26 स्टूडेंट जो है उनकी टीम है जो कि डिफरेंट बोर्ड से MCQs बनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हाई फ्रीक्वेंसी MCQs हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। ठीक है, एक साथ में आपको आंसर भी गिवन होता है और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। और फेसबुक पेज कौन सा है हमारा, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पे, तो वो कौन सा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू से न्यू आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। ठीक है, ये जो MCQs है हमारे पास PDF की फॉर्म में है। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज MCQs। ओके, मैं ज़रा MCQs को दोबारा वो कर लूँ। तो ये जो हमारे पास MCQs हैं ये PDF के फॉर्म में है, तो मैंने डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशली जो MCQs हैं ये कंपाइल किए हैं एडमिन फातिमा क्वीन ने, और ये तकरीबन 45 to 50 MCQs हैं, डिफरेंट बोर्ड से हैं। ठीक है, तो चलें इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टीम पंजाब है उसकी कुछ MCQs देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द हाइस्ट वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस और वैन डर वाल्स कांस्टेंट, सो दैट इज़ NH3। गिवन इन वैन डर वाल्स इक्वेशन इज़ फॉर, जो इक्वेशन है वो A/V² किसके लिए वैलिड है, सो दैट इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के लिए। If 1 mole of a gas at STP is increasing temperature by 1 Kelvin, how much energy it will absorb? So that is 0.0821, यानी R की वैल्यू जो है वो दी हुई है। At room temperature whose kinetic energy is greater, so all have the same have kinetic energy, greater kinetic energy, क्योंकि तीनों gases हैं। Which of the following is not a characteristic of ideal gas? So that is can be liquefied. Volume of gas at STP is 10 dm cube. At what temperature does its volume become 30 dm cube, keeping pressure constant? So that is 8 to 19 Kelvin. Which one of the following pair gas possesses equal volume at STP? So that is 0.5 moles of NO and 16 gram of O2. ठीक है, स्पेशली ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स पे। देखें अब यहाँ पे NO 2 एटम्स हैं और O2 इसके भी 2 एटम्स हैं, तो स्पेशली एटम्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो वैल्यूज़ हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो एंड अ गैस इनिशियली एट 27 सेंटीग्रेड इज एजिटेटेड अप टू 327 सेंटीग्रेड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डबल्स। Which of the following gas show more non-ideal characters? So that is CO2. Accelerated volume is times the actual volume of gas. So that is 4 times the actual volume. V is equal to 4 VM, जो आपको याद होगा फेडरल की बुक में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम टीम फेडरल की बुक से जो है MCQs हैं। The constant quantity of boyleslaw is, so that is mass and temperature. What is the nature of pressure volume graph in boyleslaw? So that is rectangular hyperbola. What is the nature of pressure volume versus pressure graph in boyleslaw? So that is straight line parallel to p-axis. The nature of van der Waals graph in Celsius scale graph in Charles law is, so that is straight line. Which scientist discovered the absolute scale of temperature? So that is Kelvin. Next to that, the mass of an O2 molecule is, so that is 5.31 10 power minus 23. The number of molecules of 7 gram of N2 gas is, so that is 1.506 10 power 23. With the help of ideal gas equation we can determine both of these. What are these? So that is molecular mass, and the second one that is density of gas. Next we have team KPK MCQs. What are these? General gas equation is the combination of dash, so that is C, voltmeter, volume, temperature, pressure and number of moles of gas. Standard mole of any gas is, so that is 1. Unit of R in general gas equation, so that is joule per Kelvin per mole. How many joule in 2 calories? So that is 8.368 joules in 2 calories. Plasma is dash conductor of electricity, so that is good conductor of electricity. Van der Waals become identical to ideal gases at A and B both decreases. So A and B यहाँ पे गैस और प्रेशर की, सॉरी उसमें टेम्परेचर और प्रेशर की बात की होगी, वो यहाँ पे मिसिंग है। चलें सो उसके बाद मोनोटॉमिक गैस रिस्टोर एनर्जी इन, सो दैट इज़ आंसर ए। तो आंसर ए जो है इसमें ट्रांसलेशनल मोशन। सो उसके बाद जो हमारे पास MCQs है उसकी बात कर लेते हैं कि मोनोटॉमिक गैस स्टोर एनर्जी इन, सो दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। गैसेस बिहेव आइडियल एट, सो दैट इज ऑप्शन ए अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। मोस्ट गैस एट टेम्परेचर, सो दैट इज आंसर 4 and 2. द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, सो दैट इज बी, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम नहीं हो सकता। सो मेन जो है बल्कि प्रेशर और वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट होते, बॉयल्स लॉ में सिर्फ टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं। ग्राफ बिटवीन P and IV इज, सो दैट इज स्ट्रेट लाइन।
Let the pressure P and the volume V for certain gas if the pressure is increased by 25% at the constant temperature, that what would be the volume of gas? So that is 0.75 volume. If the pressure of a certain amount of gas is reduced to 1/4 of its initial value with reduced temperature at a fixed temperature, then what would be its new volume? So that is option C, 4 times. In which scale of the temperature cannot be negative? So that is absolute scale. Or then team sindh, a gas expanded at constant temperature, so that is, you can say, the kinetic energy of the molecule remain constant. To compress a gas by 1/3 of its original volume of the gas, pressure of the gas would be, so that is 3p. The actual volume of gas molecule is considered negligible at following pressure, so that is 2 atm. The deciding criteria for non ideality in a gas is, so that is polarity. उसके बाद हमारे पास है गैस ऑक्यूपाई 100 dm³ वॉल्यूम एट 27 सेंटीग्रेड. व्हाट वुड द वॉल्यूम इफ इट्स टेम्परेचर बिकम्स डबल? सो दैट इज 200 dm³. 100 ml of CO2 and 100 ml of NO2 हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड वैसे यहाँ पे सेम नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स भी हैं. सो वी कैन से सेम नंबर ऑफ, बल्कि डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स. बिल्कुल ऑप्शन सी भी ठीक है. सो डी इज़ द राइट ऑप्शन देयर. गैस विच गैस इज मोर आइडियल एट STP? So that is H2. The state at which the rate of evaporation become equal to the rate of condensation is called as state of dynamic equilibrium. The ratio of diffusion of two gases are in the ratio 1:2, so their molecular masses should be in the ratio, that is D, 4:1. What are the following statement? Which of the following statement of Avogadro hypothesis is true? So that is answer C. The atomic or molar mass is directly proportional to the density of a gas. And the varying temperature is inversely proportional. The varying pressure is directly proportional to density of gas, where volume directly proportional to density of gas. वॉल्यूम डायरेक्टली हो सकता है, ठीक है. और देन सॉरी, इसका जो है सी ऑप्शन ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है हमें. The atomic or molar mass is directly proportional to density of gas. Avogadroslaw, equal volume of all gases at all the volume and same temperature and pressure have the same number of molecules. The density of equation of the gas is derived from the ideal gas equation. Avogadro speaks that the number of moles is directly proportional to volume, hence the molar mass should be directly proportional to the density of gas. The higher the molar mass, the denser it is. Okay, now we have Team Balochistan MCQs, and so a gas diffuses 1/5 times as fast as hydrogen. Its molecular weight is 50. The rate of diffusion of CH4 at a given temperature is twice that of gas X. The molecular weight of X is, so that is 64. For a given mass of gas, if the pressure is reduced to half, then temperature is double, then the volume will be, तो वो जो है आपके पास 4v हो जाएगा. The average distance traveled by a molecule between two successive collision is called as mean free path. The force exerted by 76 cm3 long column of Hg on an area of 1 cm3, 1 cm square at 0 centigrade, so that is called as standard pressure. So that's all. Thank you so much for watching the video, and join our Facebook group as well, that is given there. Especially remember these student in prayers जो कि MCQs में जो है MCQs को बनाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए. सो ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं. यहाँ पे आपको तकरीबन डेली बेसिस पे 1000 MCQ डिस्कशन को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए. सो मस्ट चेक आउट दिस वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Till then, next video, take care. Allah Hafiz.